Friends, this is a small concept which is related to your part of circular motion, students. Okay, but it's actually dealing with respect to your topic called gravitation, which you'll be doing it in class 12th. Since when you speak about a satellite, since every satellite is revolving around, suppose if I say a satellite is said to revolve around the Earth, okay, what kind of motion a satellite is performing, students? Can you tell me? Any satellite which is revolving around the Earth, what kind of motion does it performs? Uniform circular motion. Absolutely correct. It's uniform circular motion, students. Okay. Now it's performing uniform circular motion, we consider. Let us say capital M be the mass of the Earth. This is the radius of the Earth, students, and this is the height at which you have taken the satellite. The mass of the satellite is M, students. The satellite is performing circular motion. It's performing uniform circular motion and in anti-clockwise direction, students. By using right-hand screw rule, all my linear terms will be tangential. My angular terms will be along the positive z axis if I consider. Students, मुझे चाहिए ये velocity, students. I want to find out its velocity, and this velocity is called orbital velocity, or it is called critical velocity, students, for a satellite performing uniform circular motion. M is the mass of the Earth, small m is the mass of the satellite, students. Anyone can derive the relation for critical velocity or orbital velocity for a satellite performing uniform circular motion, students. Yes, students, anyone? Yes, Zia, can you answer, Zia? Are you there, Zia? Yes, sir. Can you tell me the orbital velocity or critical velocity for a satellite performing uniform circular motion? Anybody? Since if I happen to speak about planets, planets also revolve around the sun. The time period for it remains constant. Agreed? Yes. So they perform uniform circular motion, students. अगर मैं बोलूँ करके moon is a natural satellite of Earth. For one complete revolution for the moon also, students, its time period remains constant. So it's UCM I can consider. If I take satellites, okay, artificial satellites, which are consistently revolving around the Earth, even they also perform uniform circular motion, students. So if one asks you, students, what exactly the orbital velocity, so called as a critical velocity for a satellite performing uniform circular motion around the Earth, so can you get a mathematical relation for that? Can you tell me, students? Yes, sir. बोलो रक्षित आंसर करो. Do you know it? Rक्षित, कौन सा फोर्स चाहिए स्टूडेंट्स? इफ आई वांट टू से दैट सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्टूडेंट्स, तो कौन सा फोर्स चाहिए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हाँ,
Centripetal. एब्सोल्युटली करेक्ट, फोर्स सेंट्रीपिटल। और वो ये फोर्स कौन सा है? रेडियली इनवर्ट फोर्स है ना? Yes, sir. ये रेडियली इनवर्ट फोर्स है। ये फोर्स सेंट्रीपिटल, तुम्हें बताओ क्या ये रियल फोर्स होना चाहिए या ये सीरो फोर्स होना चाहिए स्टूडेंट्स? फोर्स सेंट्रीपिटल Real force. एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये रियल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स? हु इज प्रोवाइडिंग दिस Earth. रियल? एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हिच फोर्स इज दैट कॉल्ड? इज इट Gravitational इलेक्ट्रिक? force. वेरी गुड, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। में ही students, the rest of the students, are you listening? Mehit, Rakshit, Carol, they're all answering. I don't know, Gauri, why aren't you answering, Gauri? And please, the rest of the students, why can't you support these particular people who are responding? चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स, चीजें चीजें कुछ चीज पढ़ाइए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। Why few people are able to answer? Why not the rest of them? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर। और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। Centripetal force is given by what formula? Anybody can give the formula for centripetal force, students? mv square by r. Very good. Why do I go for mv square by r? Are there any other formulas of centripetal force, students? और कोई दूसरे formulas है? हाँ students, बताओ। Students, are there any other formulas? Students को बता सकता है? Yes. mr omega square. Very good. And And mv omega. very good. अभी तीनों में से तुम कौन सा formula use कर रहे हो? Me is saying it mv square by r. Yeah, Rakshish, I know who said it. Is mv square by r the correct one which you are using it, or you need to go for some other formula? Sir, m omega square r M because omega. angular velocity. But my dear students, मैंने क्या कौन सा velocity पूछी है? V पूछा है ना मैंने? Sir, we have to use mv omega. No, my dear, then omega क्या करोगे? Omega is the angular velocity. Oh, Shreya yes. has already put the answer also. Shreya, क्या बात है यार, ये बैच के अंदर फटाफट आंसर आ रहे थे स्टूडेंट्स। There are some students who are posting the answer. Zia, see how the students are responding. Students, तुम्हारी major test हुई है? Recently कुछ major test हुई? Yes. And how was the Yes. paper? How was the paper? Good. Physics में कैसा था? अच्छा था कि नहीं था? Yes, sir. Okay, और आगे आगे का भी है पेपर? कुछ शेड्यूल पता है मेजर टेस्ट का भी आगे का? No, sir. Okay, fine. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्स सेंट्रीपिटल होंगे ना, तो हम mv स्क्वायर बाय r लेंगे भाई। स्टूडेंट्स, एक तो ऑर्बिटल रेडियस है, वेलोसिटी पूछा है ना मुझे, एंड m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट। स्टूडेंट्स, जो ऑर्बिटल रेडियस है वो रेडियस कितना होगा? स्टूडेंट्स, रेडियस इज एक्चुअली स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस। स्टूडेंट्स, ये है ऑर्बिटल रेडियस, ये स्मॉल r इज ऑर्बिटल रेडियस, इज ऑर्बिटल रेडियस r प्लस h। स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना, जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी सैटेलाइट अर्थ सरफेस से लॉन्च होते हैं, दे आर ऑल लॉन्च्ड इन व्हाट प्लेन? यू नो स्टूडेंट्स, इक्वेटोरियल प्लेन। अगर मैं ये अर्थ का स्टूडेंट्स, अगर मैं अर्थ का अगर ये दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, इफ आई हैपन टू शो द एक्सिस स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये हो जाएगा तुम्हारा वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो भी सैटेलाइट्स होती है ना, ये सारे सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन एन इक्वेटोरियल प्लेन स्टूडेंट्स। दे ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन, ये ध्यान में रखना। दे रिवॉल्विंग इन एन इक्वेटोरियल प्लेन स्टूडेंट्स। क्या हाइट पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स? विद व्हाट हाइट दे आर ट्राइंग टू रिवॉल्व? The height at which they are revolving is equal to how much? It's nearly equal to 42,000 kilometers, students, from the center of the earth. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6,400 kilometer. At what height they are trying to reach, you know students? 35,940. सोचो स्टूडेंट्स,
35,940 किलोमीटर। कभी सोचा है अबाउट द अर्थ सरफेस? तो टोटल हाइट अप्रोक्सीमेटली मैंने कितना लिया है? 42,400 स्टूडेंट्स। आई कैन गो फॉर दिस। ये है तुम्हारा हाइट, और ऊपर से कहां पे लॉन्च किया जाता है? इक्वेटोरियल प्लेन में, along east west. Such orbits, students, such orbits are called as geosynchronized orbits, geostationary orbits या parking orbit. स्टूडेंट्स जैसे जैसे गाड़ियों को कैसे पार्क करते हैं ना तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स, जहां पे भी तुम रहते हो स्टूडेंट्स, वेदर इट्स इन अ सोसाइटी और सर्टेन कॉम्प्लेक्स, आई गेटिंग इट? तो वहां पे तुम नीचे की तरफ देखोगे स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन पार्किंग लॉट्स गिवन टू यू विद येलो मार्किंग्स और ऑरेंज मार्किंग स्टूडेंट्स, है ना? और सबके फ्लैट नंबर लिखे हुए रहते हैं, यानी वो गाड़ी उसी पार्किंग में रहनी चाहिए। यू कैन पार्क योर व्हीकल इनटू अदर्स पार्किंग, या कोई बाहर के व्हीकल आके नहीं पार्क कर सकते। एक ऑथोरिटी मिला है तुम्हें वहीं पे पार्क करने की। फ्रेंड्स एग्जैक्टली every nation is putting the satellites in the orbit. हर एक का खुद का एक पार्किंग स्लॉट दिया गया है स्टूडेंट्स। सारे नेशंस अपने अपने सैटेलाइट जो लॉन्च कर रहे हैं ना, सबको पार्किंग एरिया दिया गया है, सारे इक्वेटोरियल प्लेन में पार्क कर रहे हैं। इंडिया का भी खुद का पार्किंग लॉट है स्टूडेंट्स। और ये जो सैटेलाइट्स हम जो थ्रो करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ कहाँ पे होता है मालूम है? सैटेलाइट्स हैव बीन मेड टू पुट इन एन इक्वेटोरियल प्लेन, जो ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में घूमता रहेगा स्टूडेंट्स। कुछ सैटेलाइट्स है, दे कैन बी मेड टू मूव इन अ सर्टेन लैटिट्यूड, एट अ सर्टेन लैटिट्यूड आल्सो। देयर आर सम सैटेलाइट्स व्हिच आर मेड टू रिवॉल्व इन नॉर्थ साउथ पोल, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट स्टूडेंट्स। पोलर सैटेलाइट्स तुम बोलोगे ना स्टूडेंट, पोलर सैटेलाइट्स आर जस्ट 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। उनकी हाइट अर्थ सरफेस से कितनी ऊपर है? सिर्फ 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। यस, लेकिन ये जो जियो सिंक्रोनाइज है ना, इक्वेटोरियल वाले स्टूडेंट, सरफेस से कितना है? ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर। और हर एक को एक परफेक्ट पार्किंग स्लॉट दिया गया है स्टूडेंट्स। तुम कोई भी सैटेलाइट को, तो कोई भी नेशन अपना सैटेलाइट किसी और के पार्किंग लॉट में नहीं डाल सकता है स्टूडेंट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सोचो स्टूडेंट्स, अगर ये सोचो कि ये अर्थ है स्टूडेंट्स, और ये पार्ट इंडिया है स्टूडेंट्स। ये जो पेन कैप का हैंडल है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये इंडिया है। ओके, ये इंडिया है। अभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने अपनी सैटेलाइट सामने लॉन्च कर दी। अभी ये जब अर्थ लुक एट दिस रेड पेन स्टूडेंट्स, यानी जब अर्थ रोटेट करेगा तो इंडिया रिवॉल्व कर रहा है ना? इंडिया रिवॉल्व कर रहा है, सी, इंडिया रिवॉल्व कर रहा है। और ये सैटेलाइट जो है ना, वो हमेशा इंडिया के सामने ही रखा हुआ है इंडियंस ने। तो जब भी अर्थ रोटेट कर रहा है, इंडिया रिवॉल्व कर रहा है, तो देखो ये सैटेलाइट भी देखो, ये सैटेलाइट भी हमेशा इंडिया के सामने ही रहेगा, हमेशा इंडिया के सामने ही रहेगा। तभी जाके तुम्हें एवरी टाइम सारे इंफॉर्मेशन मिलती है। इस सैटेलाइट्स का पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स? वेदर फोरकास्ट के लिए, स्पाइंग के लिए, आई गेटिंग इट? डिफरेंट सेलेस्टियल चेंजेस जो होती है अराउंड इट, आउटर स्पेस के अंदर, उसको देखने के लिए, गूगल के लिए, तुम्हारा ट्रैकिंग के लिए, एवरीथिंग के लिए तुम कर सकते हो। तो जब ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो उसके लिए हमें कौन सा फोर्स चाहिए? हमें सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए स्टूडेंट्स। ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ? G, gravitational constant, capital M, mass of the earth, small m, mass of the satellite, R upon square square. of the distance. Yes. और ये तुम पढ़ चुके स्टूडेंट्स लोअर स्टैंडर्ड्स में, बस ये फॉर्मूला लेना है, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। और श्रेया ने आंसर दे भी दिया था इसका फॉर्मूला, है ना श्रेया? श्रेया हाँ या ना? Yes, sir. श्रेया मुझे बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, बता सकते हो? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ G? 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square kilogram square inverse स्टूडेंट्स। ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अगर तुमने ये फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया, अभी देखो स्मॉल m गेट्स कैंसिल, therefore what exactly, एक r भी कैंसिल हो गया। therefore can I say what exactly the velocity will be equal to under root gm by small r, which is this velocity? Is this we call as, this is called as critical velocity, also called as orbital velocity students. So now when somebody asks you, can you tell me what is the orbital velocity for a satellite revolving around the earth?
So under root gm by r. G, universal gravitational constant. Capital M, mass of the earth. And students, what exactly the mass of the earth is? Mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kilograms. Students, ये constant है. Cause orbital velocity inversely proportional to root of r. ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, sir. And we can get the orbital velocity. यानी ये क्यों किया है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली तुम्हारा ग्रेविटेशन में चला जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन ये हम लोग ने यहाँ पे क्यों पिकअप किया है? रीजन क्या है स्टूडेंट्स? वी आर स्पीकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन, और सैटेलाइट्स परफॉर्म करते हैं सर्कुलर मोशन, तो उनके लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। एक रियल फोर्स है, और वो रियल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स? रियल फोर्सेस आर दोस व्हिच हैज ओरिजिन एंड सोर्स। अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है, मैंने बहुत पहले बता दिया था स्टूडेंट्स, रियल फोर्सेस आर दोस व्हिच हैज ओरिजिन एंड सोर्स। और रियल फोर्सेस को फर्दर तुम क्लासिफाई करोगे ना स्टूडेंट्स, so they are either contact and non-contact forces. Non-conservative, conservative में हम डालते हैं। Yes. तो यहाँ पे जो रियल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, which is a non-contact force. ठीक है, और उससे तुम्हें ये आंसर मिल रहा है। Is this clear to all of your students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the Yes, next, sir. the last derivation, the last part of it, students, the very last derivation for this particular topic, students. Suppose if in case if one asks you students, can you tell me, does the weight of the person remains constant throughout the Earth's surface? Now, students, suppose अगर मैं Earth का structure बता दूं students, तो Earth है क्या students? Earth is actually what? A geoid shape. Geoid का मतलब क्या हुआ मालूम है? Earth is slightly flattened, Flattened students. from top and bottom. Yes, and it is flattened at the equator and bulged at the equator, and it's flattened at the poles. ये है north, ये है south, ये है center. Agreed? Now students, अगर तुमने weight, अगर तुमने if you try to go for people with different mass, students, okay, suppose if I happen to go for people with a certain mass. Sujit, are you there in the lectures or not there in the lecture, Sujit? Since Earth is a perfect spheroidal, students, bulge at the equator and flatten at the poles. Students, equatorial radius is greater than students is greater than the polar radius by 21 kilometers. Students, ये पता है तुम्हें? Students, Earth का जो equatorial radius है ना, वो polar radius से ज्यादा है 21 kilometers. लेकिन हम average लेते हैं. Average 6,400 kilometers is the radius of the Earth. Students, ये ध्यान में रखना. लेकिन one can say that equatorial radius is always greater than the polar radius because it's flattened at the equator. Sorry, it's bulged at the equator and flattened at the poles. It's kind of an egg shape, oval shape, somewhat. Now, suppose अगर मैंने बोला कि suppose if I take a person, students, let us say that Jyoti is present over here right now. Okay, बाहर जाता है, अंदर आता है, पता नहीं, अंदर आती है, बाहर जाती है, पता नहीं. Students, Jyoti, ये सोचो कि Jyoti यहाँ पे poles पे है, फिर equator पे है, फिर Jyoti एक certain depth पे है, फिर ज्योति एक सर्टेन हाइट पे है, फिर ज्योति एक आउटर स्पेस पे है. तो मुझे बताओ, और ज्योति सेंटर ऑफ द अर्थ. ज्योति, तुम हो कि नहीं हो यहाँ पे लेक्चर में? आर यू देयर ज्योति? यस सर। अरे क्या बात है. तो ज्योति, तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारा वेट चेंज होगा सेंटर में, डेप्थ में, पोल्स पे, इक्वेटर पे, हाइट पे या आउटर स्पेस में? क्या तुम्हारा मास चेंज होगा? मास? हाँ ज्योति. नो सर। तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें एकदम अर्थ के अंदर डाल दिया. सोचो तुम अर्थ के अंदर गया, सेंटर ऑफ द अर्थ. ज्योति, हैव यू सीन अ मूवी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ? ज्योति, नो सर। क्या कर रहे हो तुम? करते क्या हो?
मूवीज वगैरह देखते हो कि नहीं देखते हो? लाइफ एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि बस पूरे दिन पढ़ाई 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 और फ्री मार्क्स नहीं आ रहे हैं? ये थोड़ा मूवी वूवी देखा करो। ज्योति अभी टाइम मिले ना, हेलो ज्योति सुन रहे हो? Yes, sir. ओके, एक टाइम मिले ना तो ये मूवी देखना, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। Okay, अगर sir. तुम्हारे लैपटॉप्स वगैरह कहाँ पे भी डाउनलोड करना, लेकिन जब भी देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे देखना। फिर साथ में मामा को बोलना पॉपकॉर्न समोसास वगैरह बनाए तुम्हारे लिए। फिर कर्टन्स वगैरह बंद कर देना एकदम। ओके, और थोड़ा सा स्पीकर वगैरह होगा तो स्पीकर के साथ में कनेक्ट करना साउंड। और फिर पापा मम्मी और जो भी होगा सबके साथ में बैठ के फिर वो मूवी देखना। और फिर मुझे याद करना। ओके, और फिर मूवी के बाद में बताना करके ये पापा को कि ये किसने बोला था देखने के लिए। देखोगे कि नहीं? हंसो मत। हाँ, sir. ओके। Students, has anybody watched the movie Journey to the Center of the Earth, students? देखा है Yes, किसी sir. I have seen that movie. Yes, sir. ने? Who's this? ओम पंचाल, कैसा है मूवी? ओम देखा है? बहुत ही अच्छा है सर. और इसको 3D में देखोगे तो कितना सही लगता है ना? हाँ, अच्छा लगता है. वो एक्चुअली 3D इफेक्ट में होता है। अगर तुम्हारा स्क्रीन 3D इफेक्ट है और तुम्हारा घर के अंदर अगर चश्मे भी 3D इफेक्ट में होगा तो स्टूडेंट्स इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी फिक्शियस मूवी, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। यानी तुम्हें एक्चुअली फीलिंग आएगा कि तुम अर्थ के सेंटर में जा रहे हो। तो सपोज अगर मैंने ज्योति को सेंटर में ले लिया स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ उसका उसका मास क्या होगा? मास बढ़ेगा या कम होगा या क्या होगा? हाँ स्टूडेंट्स, एनीवन? बढ़ेगा सर. मास बढ़ेगा? कम होगा. कम होगा? सर कम होगा सर. ओके माय डियर, ज्योति का मास सेम होगा। ऐसा थोड़ी है कि ज्योति जब भी सेंटर ऑफ द अर्थ आएगी तो उसका हाथ छोटा हो जाएगा। हाँ, ज्योति तुम सेंटर पे होगा तो हाथ छोटा हो जाएगा, हाथ छोटा हो जाएगा। तुम सरफेस पे होगा तो हाथ बड़ा हो जाएगा। तुम सेंटर में जाएगा तो पेट छोटा हो जाएगा तुम्हारा। सरफेस पे होगा तो पेट बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। Sir, Students, weight will mass continue to remains decrease. constant, weight will change. Okay, mass remains constant, students. मास क्या होगा? मास विल रिमेन कांस्टेंट स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होगा? वेट चेंज होगा स्टूडेंट्स। Why weight changes? Because weight is equal to m into g, gravitational acceleration, students. Gravitational acceleration changes. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, gravitational acceleration at the center is always zero. Gravitational acceleration at a depth decreases. Gravitational acceleration at poles, it's less. Gravitational acceleration at equator is more. Gravitational acceleration at a height decreases. Gravitational acceleration at outer space is practically zero. समझ में आया अभी? समझ में आया? अभी देखो, ज्योति को सेंटर में ले लो तो उसका वेट जीरो हो जाएगा। ज्योति को पोल्स पे लेगा तो उसका वेट कम होगा, जीरो नहीं होगा। इक्वेटर पे लेगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा। डेप्थ में लोगे तो उसका वेट कम होगा। गेटिंग इट? हाइट पे लोगे तो और कम होगा। आउटर स्पेस में तो शीट फील वेटलेस। स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. So students, what are we concluding, students, over here? That weight changes from place to place, but mass remains constant. Agreed? Agreed? Yes, sir. Now we are trying to find out acceleration due to gravity at a certain latitude. Now, for example, अगर मैंने ज्योति को ना ही मैंने पोल्स पे लिया स्टूडेंट्स, ना ही मैं पोल्स पे ले रहा हूँ, ना ही मैं इक्वेटर पे ले रहा हूँ, ना ही मैं सेंटर में ले रहा हूँ, ना ही मैं अर्थ के डेप्थ के अंदर ले रहा हूँ, ना ही मैं हाइट पे रख रहा हूँ, ना ही मैं आउटर स्पेस पे रख रहा हूँ। अगर सपोज ज्योति को किसी अर्थ सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे रख रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, नाउ आई एम ट्राइंग टू प्लेस ज्योति एट अ सर्टेन लैटिट्यूड। थिंक दैट ज्योति इज ओवर हियर at a particular latitude.
लैटिट्यूड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द लैटिट्यूड? शायद तुम लोग ने ज्योग्राफी पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, है ना? Yes, sir. अगर तुम अर्थ का डायग्राम देखोगे स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड, वर्टिकल इज लॉन्जिट्यूड. तो लैटिट्यूड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लैटिट्यूड इज एनी प्लेन, स्टूडेंट्स, एनी प्लेन parallel to the equatorial plane is called a certain latitude. या latitude का दूसरा मीनिंग भी students, a line joining the center of the earth to a given place on the earth's surface. Students, a line joining the center of the earth to a place on the given surface measuring an angle with the equator is at a certain latitude. हम यहाँ पे find out करेंगे gravitational acceleration at a certain latitude. क्या ये क्लियर होगा? Students, is this clear? We are trying to go for the mathematical relation for it. So students, जब भी तुम ये concept करोगे तो ये ध्यान में रखना students, weight of a body changes from place to place, mass remains constant. If in case if you are a goldsmith, students, अगर तुम goldsmith हो, chances है ना, तुम अगर goldsmith हो students, तो तुम कहाँ पे buy करोगे gold और कहाँ पे बेचोगे gold? तो बता सकता है students? Yes, दिया, बोलो दिया. दिया, are you there? दिया, तुम्हें आंसर देना है. दिया, are you there? अगर तुम गोल्डस्मिथ हो तो तुम कहाँ पे खरीदी करोगे गोल्ड को और बेचोगे कहाँ पे? Okay, anybody else? Anyone else? I will buy from poles and send it on equator. Very good. तो यहाँ पे क्योंकि गोल्ड का खरीदी और बेचना किसके ऊपर होता है? वेट के हिसाब से होता है. सी, सो नाइसली ही पुट फॉरवर्ड. कैरल ने क्या बोला? कैरल, यू ओनली आंसर ना? Yes, sir. तो तू आंसर क्यों नहीं देता है यार? तू आंसर दे सकता है, तू देता है. लास्ट टाइम भी तूने एक दो दफे आंसर दिया है. जिया, जिया, यू देयर? जिया, यू देयर? Yes, sir. सी, कैरल इज आंसरिंग, है ना? आया ना? Yes, sir. See, many students are answering. Isn't it, Zia? Zia? Zia, I'm asking you. Many of them are answering, isn't it? Yes, sir. Okay. Will you inform your parents about that? About what? That many of them are answering? I do sometimes answer, but abhi I didn't. Okay. No, I'm not telling about you. I'm speaking about rest of them. Will you will you inform your parents that most of them are answering? Not most of them. Then of course, most of them are answering, my dear. Mihir is answering. Basically, Mihir, Shreya, Carol is Gauri, answering. Rakshit, Carol. Chal is answering. Carol is answering. So many names I've said it. See? Baki pure to they're not answering now. So Baki are in your team. That is why. These people are in my team. That's why. जो तुम्हारे टीम में है वो नहीं आंसर कर रहे. अब इधर टीम कहाँ से आ गई बीच में? I am not in anybody's team here. Of course, that is why. No, I'm not in anybody's team. It was just to ask you whether you are there in the lectures or not. Okay, Ria. Yes, But okay, sir. yeah, but Ria, your other friends are really doing better, and Smith is really doing better. Students, the guy from other batch, उसको तो कोई भी problem throw करो, he's able to do it so fast. And he's pushing the lectures further. And students, he's the one along with two more students. पूरे batch को आगे खींच के लेके जा रहे हो. And there is one girl who's trying to compete with them all the time.
But over here, I could see that girls don't respond except Gauri. Even Zia doesn't reply at all. Whenever I have a parents meeting, I'm going to tell very clearly to your parents which all students are replying and which all students are not. Okay, students, we'll be going for G at a certain latitude. Okay, can I erase this? इसको मैं erase कर दूं, students? Yes, Shreya, you do. तुम unmute बहुत कम करते हो, लेकिन you do. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ, students? Yes, sir. Okay. Now we go for gravitational acceleration, students, at a certain latitude. And the formula, students, what we are going to get it, students, is G at a certain latitude is equal to G minus R omega square cos square lambda, students. ये क्या है, students? G at a certain latitude. G on the Earth's surface. R क्या है? 6.4 into 10⁶ meter. Students, ये R क्या है? Can you tell me what does this R stands for? Radius of the Earth. Very good. RE मैं लिख सकता हूँ. 6,400 kilometers को मैंने मीटर में किया है. Omega क्या है, students? What is omega over here? Is students, can you tell me what is omega over here is? Angular Angular velocity. velocity of the Earth rotating about its own axis, students? Yes. Agreed? Yes. So this is the angular velocity of the Earth rotating about its own axis. Okay, students. Can you tell me what is the angular velocity of the Earth rotating about its own axis, students? Students, what is the angular velocity of the Earth rotating about its own axis? रोटेशन हाँ बताओ. अक्षत बोल सकते हो? रोटेशन बोला मैंने. Okay, नहीं मुझे magnitude चाहिए. Angular velocity of the Earth rotating about its own axis, students. मुझे उसकी magnitude चाहिए. मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अर्थ रोटेट होता है तो उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. हाँ, what is the time taken for Earth to complete one rotation? 24. 24. हाँ, 24 hours. Zia, what is the answer? Time taken for the Earth to complete one rotation about its own axis? Zia, are you there? Knock knock. देखा? नहीं है. ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ. Yes, sir, I'm there. So how many days passed? 24 hours now. You're asking me. No, I'm मतलब 50-50. That's all. अच्छा, 50-50 वाला आंसर है. Okay, students, the answer is 24 hours only. Why you are so shaky? See, the other two guys gave so correct answer. Have blind faith onto these guys. Yeah, have blind faith. Okay? I didn't heard पहले. सच्ची Oh, में. very smart, huh? Very smart, very smart. Copy. No, सच्ची में. My mom was calling me, so I was going there, but then you called my name like knock knock करके, so I ran back there. अच्छा. यानी देखो स्टूडेंट्स, मैंने उसको सही टाइम पे पकड़ा.
She was not there on the chair. She was going. Okay, come back. Students, angular velocity of the Earth is what time period remains constant. Students, for one complete rotation, it takes 24 hours. ये ध्यान में रखना, students, 1 day. And that corresponds to 86,400 seconds, students. यानी अगर किसी ने पूछा क्या अर्थ परफॉर्म करता है रोटेशनल मोशन? Yes. What is omega of Earth? Sir, omega of Earth all the time remains constant. Of course. And what is its magnitude? Sir, it's omega. Omega remains constant. So should I write on d theta by dt? Yes, simply I should write on theta by Theta d. by D. Of course, क्योंकि d theta by dt नॉन UCM के लिए हो जाएगा, तो ये तो UCM होगा. Theta by d तो can I write on 2 pi by t for one complete rotation? Students, 2 pi by t हो जाएगा theta by t को. Yes. एक complete rotation के लिए 360 degrees होगा, and time is t. What exactly 2 pi will be 6.28 and t 24 hours 86,400 seconds. So students, ये होगा radian और ये होगा second. So what is the value of omega of Earth? Omega of Earth will be equal to how much? 7.26 into 10 raised to minus 5 radian second inverse. Students, क्या ये clear हुआ value? Yes, sir. Clear? Any Yes, sir. student, angular velocity of the Earth, students, angular velocity of the Earth remains constant, students. And see the value of angular velocity of the Earth. Is it very large or very small? Students? Look at the value. Is it very large or very small? Very All. Students, 10 raised to minus 5 तभी जाके तुम्हें फील होता है. Students, अभी तुम लोग सारे लोग lectures ले रहे हो, अपने अपने घरों में हो, है ना? Some might be sitting on a cot, बेड के ऊपर लेटे लेटे lectures लेते होंगे. कोई डेस्क सामने रखा हुआ रहेगा और पाँव उसके ऊपर चढ़ा के बैठे हुए रहेगा और पीछे ऐसे सोते सोते, है ना? कोई दूसरा काम कर रहा है सेलफोन के ऊपर और सामने लेक्चर्स है, तो मम्मा आएगी तो सेलफोन साइड पे, है ना? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने फुर्सत से और फिर बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं जमता है, हमें ऑफलाइन ही जमता है, और ऑफलाइन के अंदर क्वेश्चंस पूछो तो आंसर्स आते नहीं है. आओ तुम लोग ऑफलाइन में, आओ तुम ऑफलाइन में. नहीं, तुम्हें क्लासरूम में खड़े करके क्वेश्चंस नहीं पूछा एंड ऑन द स्पॉट अ कॉल विल गो टू योर पेरेंट्स. In that time that will be great fun, students. Offline के अंदर जब भी lectures होंगे ना, it will be really good. It will be exactly in front, and during that time only questions will be raised, and that time itself only the parents will be called. A list of parents का मैं students का नाम लिखूंगा, and I'll tell at the counter to give a call to your parents कि your kids are entering into the lectures without learning. Every lecture this will happen. I'm much more happy. And those students who want offline, they should be really appreciating that things will be really getting it better for you all. तभी तुम पढ़ के आओगे यहाँ पे, तो तुम लोग you are doing it to your comforts. तुम्हें मूड में आता है तो तुम बैठते हो, तुम्हें मूड में आता है तो तुम आंसर देते हो, तुम्हें मूड में आता है तो तुम करते हो, नहीं तो नहीं करते हो. और रीजन क्या? नेटवर्क सही नहीं है, समझ में नहीं आता है, फलाना है, देखना है, सब कुछ है. Okay, students, ये angular velocity देखो students, 10 raised to minus 5. Students, यानी तुम तुम्हारे घर के अंदर लेक्चर ले रहे हो, अर्थ रोटेट हो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन तुम्हें फील ही नहीं हो रहा है. स्टूडेंट्स, उसका मतलब ये हो गया कि तुम मेरी गो राउंड पे हो. स्टूडेंट्स, तुम मेरी गो राउंड पे हो और तुम्हारा मेरी गो राउंड मूव हो रहा है विद 10 raised to minus 5. स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला 10 raised to minus 5 यानी 0.0, सपोज 10 raised to minus 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे मैंने कुछ वैल्यू दे दी स्टूडेंट्स, तो 0.00001 meter per second. Can I say it's a very large speed or a very small speed? Very small. तभी जाके तुम्हें कुछ फील ही नहीं हो रहा है. समझ में आ रहा है? Now अगर मैंने पूछा if I take any object at a particular point P, अभी सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया at point P, मुझे बताओ यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? हमें ये चाहिए जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन लैटिट्यूड. लैम्डा क्या बन गया? लैटिट्यूड, तो ये होगा एंगल लैम्डा measured with the horizontal. When Earth is performing rotation motion, students, listen carefully. When Earth is performing rotation motion, Earth is performing rotational motion, students.
What about this particular place on the Earth's surface? Point P is performing. तो बताओ स्टूडेंट्स, पॉइंट P क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? राइट नाउ अर्थ रोटेट कर रहा है, लेकिन तुम यूसीएम कर रहे हो, तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है स्टूडेंट्स। यानी तुम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो स्टूडेंट्स। अगर बाय चांस किसी ने अर्थ को जोर से रोटेट किया स्टूडेंट्स, अगर बाय चांस अर्थ का रोटेशन स्पीड बढ़ गया तो क्या होगा सर? हम तो फ्लाई हो जाएंगे, हम बाहर की तरफ चले जाएंगे। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा which is equal in magnitude and opposite in direction to which force? Centripetal force। ये कौन सा वेक्टर हो गया सर? ये हुआ मेरा रेडियस वेक्टर, ये हुआ मेरा परपेंडिकुलर, ये लैटिट्यूड, तो ये भी लैटिट्यूड होगा। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? A place on the Earth's surface, if the Earth is performing rotational motion, every place on the Earth's surface is performing uniform circular motion, except for those places which are along the axis, north and south pole। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर जो भी प्लेसेस होगी वो रोटेट नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, दे आर एट द सेंट्रल एक्सिस। उसके अराउंड सारे कौन से परफॉर्म कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल, तुम्हें मेरी को राउंड पे मैंने खड़ा कर दिया स्टूडेंट्स, मेरी को राउंड पे खड़ा कर दिया और मेरी को राउंड धीरे से घूम रहा है। अगर बाय चांस मैंने मेरी को राउंड को फास्ट घुमा दिया तो तुम क्या करोगे? यू विल बी गेटिंग अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, बाहर की तरफ जाओगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। यानी अभी भी क्या हो रहा है मालूम है? ये जो प्लेस है ना, या तुम्हारे पे सपोज अगर तुम्हें मैं यहाँ पे लेता हूँ एक प्लेस पे, तो यहाँ पे तुम्हें क्या हो रहा है सर? यहाँ पे हमें फोर्सेस मिल रहा है स्टूडेंट्स, फोर्स मिल रहा है। एक तो तुम्हारा क्या होगा? वेट जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, है ना? वेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दूसरा कौन सा फोर्स है सर? एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस वी कंसीडर। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये लैम्बडा हो गया फ्रेंड्स। अगर मैं ये फोर्स को रिजॉल्व करूं तो एम आई गेटिंग दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स? यस, एक ये होगा और ये होगा स्टूडेंट्स। ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इज एक्चुअली वन ऑफ द फोर्स व्हिच इज कंसीडर्ड अ रिएक्शन फोर्स टू द एक्शन। तो ये फोर्स कौन सा होगा सर? ये फोर्स होगा F cos lambda, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल cos lambda। ये कौन सा है सर? द वेट ऑफ द बॉडी m into g, directed from the place towards the center। यानी स्टूडेंट्स, if any object is there on the earth's surface students, one force is the weight, other one is what? Component of force of centrifugal, or ये weight means, can I say at a point P there are two forces acting? Yes. At point P how many forces acting? Two forces acting, आया ना? Yes, sir. And comparatively ये force इससे greater होगा। हाँ Yes. स्टूडेंट्स, तो अगर mg इससे greater होगा तो can I say the difference of the two forces, the difference of the two forces is actually the apparent weight at a certain latitude। So this becomes your which weight? Apparent weight। Students, the weight which appears to be, क्योंकि students, component of force of centrifugal which is actually a kind of a normal reaction force, वो ये वाले फोर्स के इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देता है, और ये जो डिफरेंस जो होता है ना, वो बन जाएगा तुम्हारा अपेरेंट वेट। योर वेट अपीयर्स टू बी। स्टूडेंट्स, तुम्हारा एक्चुअल वेट तो mg है, लेकिन तुम्हें फील होगा कि तुम्हारा वेट क्या है, डिफरेंस में आएगा। ये ज्यादा वैल्यू नहीं है, ये बहुत कम वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। I'll tell you why is it so। ये तुम्हारा एक्चुअल वेट है, तो अपेरेंट वेट क्या होगा सर? अपेरेंट वेट एट certain latitude is equal to actual weight minus component of force centrifugal। अब यहाँ पे देखो actual weight। Friends, what is the formula for force centrifugal? What is the formula for centrifugal? तीन formulas, mv square by r, m into v into omega, mr omega square। MR omega. Now see, over here you are answering so well, m r omega square। ये फॉर्मूला मैंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि सर यहाँ पे आपने ये रेडियस दिया, देखो ना, अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आर है, हेलो,
अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आ रहा है, मुझे अर्थ का रेडियस थोड़ी चाहिए, मुझे तो तुम्हारा रेडियस है ना, तुम तो रिवॉल्व कर रहे हो, तो ये तुम्हारा रेडियस होगा ना, स्मॉल आर होगा ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो Yes. आर और ओमेगा क्या होगा सर? ओमेगा तुम्हारा और अर्थ का सेम होगा। अगर अर्थ रोटेट कर रहा है स्टूडेंट्स, अर्थ रोटेट कर रहा है विद 7.26 into 10⁻⁵ रेडियन सेकंड इनवर्स, सो गौरी भी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है विद सेम स्पीड। गौरी अपने घर के अंदर बैठ के लेक्चर सुन लिए, तो अगर किसी ने पूछा गौरी व्हाट एग्जैक्टली द स्पीड विद यू आर रोटेटिंग, तो यही होगा, तो होगा m r omega square, and this is cos lambda. Now when you look at this right angle triangle, students, what exactly cos lambda in this right angle triangle? Cos lambda is equal to what? Adjusted upon hypotenuse. So students, can I write on small r as r cos lambda? Students, can I substitute the formula? So what exactly is the formula for gravitational acceleration at a certain latitude? M g lambda is equal to m g minus m. Instead of small r, can I write on r cos lambda? Yes. So r omega square cos square lambda, and this is your formula for apparent weight at a certain latitude, students. यानी तुम्हारा weight appears to be, hello, अभी सोचो, तुम कोई जगह पे हो अर्थ के, students, तुम कोई प्लेस पे हो जिसका लैटिट्यूड तुम्हें दिया है 30 डिग्रीज या 60 डिग्रीज। students, तुम्हारा mg तो तुम्हें पता है, एग्जैक्ट वेट तुम्हें पता है। अभी Yes. आंसर मैंने ये वैल्यू क्या बोला है? Is this value very large or very small? Very small. But how do you come to that conclusion? What is capital R, radius of the earth? How much is the radius of 7.2. +6 में आता है, ये +6 में आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर देखो, ओमेगा स्क्वायर देखो, ये स्क्वायर करो तो -10 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो देखो +6 और -10 का मतलब कितना होगा? Minus. -4। तो कहना से ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। Yes, sir. तो ये वैल्यू छोटी है, और इसमें से अगर तुमने थोड़ा सा वैल्यू निकाल दिया, वो तुम्हारा वेट अपीयर्स टू बी हो जाएगा, बस। लेकिन हमें क्या चाहिए था सर? हमें वेट नहीं चाहिए था। आपने पूछा था ग्रेविटेशनल एक्सीलरेटर सर्टेन रेट, तो सिंपल मास कांस्टेंट Fan. होता है। ज्योति को हम लोग ने सेंटर में लिया था, डेप्थ पे लिया था, पोल्स पे रखा था, इक्वेटर पे लिया था, आउटर स्पेस में लिया था, हाइट पे लिया था, तो उसका मास सब जगह पे कांस्टेंट था, मास चेंज नहीं हो रहा था, तो मास को मैं कैंसिल कर देता हूँ। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अ सर्टेन लैटिट्यूड? g lambda is equal to g minus r omega square cos square lambda. This is the gravitational acceleration for a body on the Earth's surface at a certain latitude. And latitude is a plane parallel to the equator, or a line joining the center of the Earth to a place forming an angle lambda with the equator. Is this clear, students? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes, excused. Sir, the force centripetal and the component and the cos component of it, it would be larger in magnitude as compared to mg, right? No, what is saying it? What is saying it? Sir, the FCP cos lambda, Lambda. that would be greater in magnitude as compared to mg, na? Because we are being thrown out if we consider that case. No. You when exactly will be thrown out, my dear? When the omega, how can this will be greater? This is smaller. Look at what is F. F is mr omega square. Students, force is equal to what? Mass into acceleration, and omega square will be 10 to minus. This is still very small. This is greater. Sir, that should be CF, not CP, I guess. So FCF we consider. It's a component of the force centrifugal. In the So what formula you you have written is FCP. It's force centrifugal. Centrifugal is a component of the force centrifugal, which is equal in magnitude to centripetal. लेकिन ये कम ही है गौरी, ये हमेशा कम होगा इससे। और फेंकना क्यों? And what is the reason for the body to be thrown off? You know, what is the reason for the body? If by chance, if the speed of the earth increases, students अभी ध्यान से देखो प्लीज। अभी अगर एक क्वेश्चन मैंने पूछा स्टूडेंट्स, what happens if the omega value increases? स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दी, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, अगर मैंने ओमेगा की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या होगा? डिफरेंस बढ़ेगा या डिफरेंस कम होगा?
Agreed? So the weight will further decrease and the body will lose contact. उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे होगा? उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे होगा? इक्वेटर पे and least at poles. Students, अगर by chance in future अगर जब भी अर्थ थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया ना अर्थ का, तो all those people who are along the equator, students, they will have less bound force by the earth. They will be thrown away from the earth's surface. But those which are closer to the axis will be still bound to it, provided you increase the angular speed. Is it clear, students? Sir, it's because of the radius, right? Yes, it's because of the radius, of course. And the value of omega is also greater. अगर मैंने इक्वेटर पे लिया तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने अगर इक्वेटर पे लिया तो मैं ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, गौरी ये वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, आया ना? Yes, sir. ऊपर से अगर मैंने ओमेगा इंक्रीज किया तो ये भी वैल्यू बढ़ेगी, आया ना? Yes, sir. अब ये सोचो जी को मैं 10 ले रहा हूँ, पहले केस में जब अर्थ आराम से रोटेट हो रहा है विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, लेट मी टेक द वैल्यू 2, अज्यूम एज 2, ये पूरी वैल्यू मेरी 2 है, तो आंसर क्या आ रहा था? 8 आ रहा था, हाँ आया ना? Yes, sir. Now suppose if I increase the value of r, if I increase the value of omega, that means can I say now this value is increasing, so can I say now this becomes 10 minus 6? Yes, sir. 4. So what is my answer now? Sorry, what is my answer now? 4. Agreed? Yes, sir. So is the weight increasing or decreasing? Increasing. Weight is decreasing and you'll be thrown away. Are you getting it? Yes, sir. So I had one more doubt that that the people on the earth, they are performing uniform circular motion while the earth is rotating. So how is that? But what are you saying? What are you thinking? I didn't get you. Are you able to hear me now, sir? Yeah, bolo. So the people or the people on earth, they are performing uniform circular motion. So how is that? Gauri, think as if there is a spinning top. Have you seen a spinning top? Yes, sir. Think as if there's a top which is rotating and you have put a small red dot on that particular top. So, okay, and when the spinning top is rotating and if you watch that red dot, what kind of motion red dot is performing? Circular motion. Agreed? Yes, yes, sir. And यहाँ पे top का example कौन है? Earth है. Is the speed of the earth constant? Is omega of earth constant? Yes. Agreed? Yes, sir, it is. So अगर earth का omega constant होगा, then any place on the earth surface will perform UCM. Okay. Yes, sir, got it. और ये एक ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, शायद तुम चाहो तो यू कैन गूगल इट आउट आल्सो स्टूडेंट्स, ये टाइप करके देखना स्टूडेंट्स, टू व्हाट एंगुलर वेलोसिटी, ये इंक्विजिटिव, टू व्हाट एंगुलर वेलोसिटी इफ द अर्थ इज मेड टू रोटेट द ऑब्जेक्ट्स विल फ्लाई ऑफ, ऐसा टाइप करके देखना, यू माइट कम अक्रॉस 17 टाइम्स द प्रेजेंट वैल्यू. व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अर्थ रोटेटिंग? ओमेगा 7.26 into 10 to minus 5. अगर यही velocity 17 times हो गया ना, 17 sevens are, students, 17 sevens are 119. अगर ये आंसर 119 into 10 to minus 5 radian per second होगा ना, then the objects will fly off. Are you getting it? Yes, sir. Yes. Can I erase now, students? अभी मैं erase कर सकता हूँ. So 1 minute. Okay. Sir, what does small g stand for?
Small g stands for acceleration due to gravity. Okay. Small g is acceleration of gravity at a certain latitude. This is simply gravity. ये standard है 9.8. This small g is 9.8. Okay, constant value throughout the Earth's surface. एक practical के लिए so in general अगर मैंने पूछा what is the हम जब भी हम लोग ने problems किए थे students kinematics के problems किए थे तो हम लोग ने acceleration to gravity क्या लिया था 9.8 ही लिया था ना. Yes, sir. ये standard value. ये at a certain latitude है. Okay. Yes, sir. Minu, see, students are answering. You don't reply like Zia. Minu, are you there, Minu? No reply. Umer used to answer, he's not replying. Can I erase it, students, now? Yes, sir. Students, now can anybody tell me what is the value of G at poles and G at equator, students? If I ask you gravitational acceleration at poles and gravitational acceleration at equator, can you tell me that? Sir, it should be 9.8 at the poles. Okay, with the answer there, students. Students, if you happen to take this mathematical, students, ये mathematical relation to help करेगा, students. Agar suppose if I take it at equator, so students, if I consider at equator, now I'm trying to draw a small diagram, students. 7. So now suppose if I say this is lambda, if I take a point on the equator, students, so what exactly lambda will tend to be 0, and this will come at equator. This is west, this is east. So lambda becomes 0, students. What is cos of 0 will be equal to 1. What is my formula? G at equator will be equal to G minus, what is cos of 0? 1. So it's R omega square. This becomes my equation for G at equator. क्या ये clear हुआ, students? Yes. Students? Now suppose if I ask you, if I take this particular point P at poles, students, if I take it at poles, north पे या south पे, so what exactly lambda becomes? Lambda becomes at poles. Sir, 9. Absolutely correct. 90 degree pi by 2. What is G at poles? G at poles is equal to G minus R omega square cos of 90. Students, what is cos of 90? Students, what is cos of 90? Zero. Oh, 0. cos of 0 is 1. Hello, cos of 0 is 1. Cos of 90 is 0. तो अगर ये पूरा 0 आ गया तो 0 into R omega square 0 हो जाएगा. यानी what is G at poles? G at poles is equal to G. Now students, can I substitute this G back in this equation?
and substitute it back. Our students, तो क्या आंसर आ रहा है? ध्यान से देखो students. G at equator is equal to G at poles minus R omega square. Students, अभी पता चला? मैंने जब भी पहले बोला था कि ज्योति को अगर मैं पोल्स पे लूं या इक्वेटर पे लूं तो कहाँ पे उसका वेट ज्यादा होगा. फिर मैंने पूछा था अगर तुम गोल्डस्मिथ हो तो तुम कहाँ पे खरीदी करोगे, कहाँ पे बेचोगे. तो रक्षित ने शायद आंसर दिया था. रक्षित, यू ने आंसर ना? Was there? Yes, sir. Okay. So अभी suppose if I happen to go for now, see over here, यहाँ से तुम क्या conclude करोगे? So G at poles minus G at equator is equal to R omega square. From here you come to conclusion, sir, G at poles is greater than G at equator. By how much? By how much? R omega, R omega square. 6.4 into 10 raised to 6 into 7.26 into 10 raised to minus 5 raised to the power of 2. ये value, which is around approximately 0.0033 students. तभी जाके students तुम लोगों ने school level में शायद पढ़ा होगा दो values, G at poles and G at equator around it nearly equal to students 9.81 and 9.78. But for practical we consider is 9.8 meter per second square. Are you getting students? Is this clear? Yes. इससे पता चलता है weight changes from place to place, but mass remains constant. क्या मैं erase कर सकता हूँ students now? हाँ students, इसकी जो value है ना, please you can put on this value. अगर तुम्हें value चाहिए students, the answer is 0.0399 meter per second square students. Okay. Can I erase students? No, sir, 1 minute. Yes, Prapti. Can I erase Prapti? Yes. Done. No, sir. Okay. Friends, this was the last part of your circular motion, students. Okay. Now we'll be going for your problem, students. So kindly revise the formula, students. A lot of formulas are there in this particular chapter, students. Okay. Students, which other chapter is going on in physics with you all? Thermodynamics. Which one? Thermodynamics. Thermodynamics is going on. Yeah, thermal properties of matter. The thermal properties of matter. Okay. Fine. Thermal properties of matter. Okay, fine. Right, friends. Now let us go for certain problems, students. Okay. Suppose if in case if I give you a question, students. Students, the question is a particle describes a horizontal circle on a smooth inner surface of a conical funnel. Students, एक मैंने conical funnel दिया तुम्हें और वो smooth है, students. It's a smooth funnel. Okay. This is the vertical axis of the conical funnel. This is the radius of the conical funnel, students. And there is an insect over here. I is the insect, students.
And this insect is moving around the conical funnel on the inner rim, students. So a particle is describing horizontal circle on the smooth inner surface of a conical funnel, as shown in the figure, students. Given to you if the height of the plane of the circle above the vertices. Students, given to you the height of the plane. Okay. Above the vertex, students, is 9.8 centimeter. This is the vertex. Okay. Find the speed of the particle, students. Which I have find out the speed. क्योंकि अगर तुम देखोगे students तो ये इसका path हो जाएगा. I wanted to find out, students, speed of the insect. Yes, can you answer for the students? और कुछ नहीं दिया, students. Nothing is given to you. A conical funnel is given to you. This is the vertex. The surface is smooth, and there is an insect inside it, which is made to move in a circular path, students, along the funnel. Okay. Its plane of revolution, students. Its plane of revolution is at a height of 9.8 centimeter from the vertex. Let's find out the velocity of the particle of the insect. क्या ये question clear हुआ, students, आपको? Yes. Can you get an answer for this now? Sir, answer variable form में दिया integer. Yeah, so you'll get an answer, students. You will be getting an answer. It's in form of a value. Variable form में नहीं आएगा ना, तुम्हें ये value दिया ना मैंने h, and it's 9.8 centimeter height. The strength was, students, 32. Now who's this Kaushik? Just now entering inside. 4 students are out. Come on, Zia, Vadim, Sujit, Shibam, Shreya, Shrina, Richa, Krisha, Prapti, Om, Nittu, Mittu, Minnu, Krisha, Kaushik, bhai, Kaushik. Kaushik, you are from Thana branch? Huh, Kaushik? Kaushik, can you unmute yourself? थाने से हो? हाँ सर. तो why late? इतना late क्यों आया लेक्चर में? हाँ सर कौशिक, कॉलेज था. कौन से कॉलेज में हो तुम? सर शुभम राज है. अच्छा, सर तो आज प्रैक्टिकल था सर. ओके, तो यानी कॉलेज में गए थे ऑफलाइन में? हाँ सर. See the dedication student, देखो. In spite of having college students, he went over there, he came and he's attending lectures. Good. कौशिक, वीडियो लेक्चर्स देखना बाद में. हाँ सर. Good boy. And see, so he's so replying it, not like other students who simply typing, like Shreya, like Meenu. Yes, anyone?
One who knows it, please unmute yourself and answer, please. एक तो मैं हिंट दूं स्टूडेंट्स, एक तो मैं हिंट दूं, मुझे बताओ ये पूरे प्रॉब्लम में मैंने बताया क्या है स्टूडेंट्स? एक कोनिकल फनल दिया है, ये वर्टेक्स है, plane of revolution is 9.8 centimeter above the vertex and a particle or an insect is just revolving in a circular path. बस उतना ही दिया है स्टूडेंट्स। मैंने पूछा उसका वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, लिसन वेरी केयरफुली, एंड देन इट्स नॉट द आंसर इज नॉट इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। अगर मैंने वेलोसिटी पूछा और मैंने बोला कि इसका आंसर निकलता है स्टूडेंट्स, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि और एक भी वैल्यू नहीं दी है स्टूडेंट्स, सिर्फ हाइट दिया है। तो मुझे किसी भी हाल में वेलोसिटी को हाइट में लेके आना है। यानी क्या क्या सोचोगे तुम? क्या v का फॉर्मूला h आएगा इक्वल टू h, या v इक्वल टू 2h होगा, या v इक्वल टू h/2 होगा, या v इक्वल टू h/3 होगा, या v इक्वल टू रूट ऑफ h होगा, या v इक्वल टू रूट ऑफ h/3 होगा, या v इक्वल टू रूट ऑफ gh होगा, या v इक्वल टू h/g, यानी h की सेम में आएगा, बाकी एक कांस्टेंट तुम्हें पता होना चाहिए। सोचो ना वैसे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो। और अगर इसी डायग्राम को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो डोंट यू थिंक सो स्टूडेंट्स that this particular inclined the cone is inclined, and can I consider the particle is performing circular motion on an inclined plane? है ना? See, Shreya has put forward the answer, but her answer is not exactly correct because the unit is not there. श्रेया अभी तो अनम्यूट करना, अगर अनम्यूट करके आंसर नहीं देना तो मैं फोन में से घुस के एक मुंह पे पंच मार के चला जाऊंगा, वापस अपने घर पे आ जाऊंगा। हाँ श्रेया, फोन में घुस के तुम्हारे यहाँ पे आऊंगा, घर पे आऊंगा, स्क्रीन से बाहर आके तुम्हारे मुंह पे पंच मारूंगा और वापस मैं यहाँ पे आके बैठ जाऊंगा। ओके श्रेया, इफ यू डोंट आंसर। Yes, sir. Sir, how dare you punch me? My dad and mom are sitting to my right and to my left. I'm very happy. If parents are sitting next to you, students, I'm very, very happy. They should and they must. Any of the students who's able to trace it, students को बता सकता है? Surrender करते हो students? Shall I solve it? Rakshit, Mihir, Yes. Priya, surrender. Carol, गौरी, गौरी है नहीं क्या? गौरी भाग गई? नहीं है, गौरी है। Rakshit has thrown his answer. Rakshit has given his answer. No, my dear Rakshit, incorrect. Rakshit, your answer is half of Riya's answer, and Riya's answer, your answer is doubled. Rakshit का आंसर बोलो। यानी दोनों का थॉट प्रोसेस थोड़ा सही जा रहा है। अगर तुम लोग दोनों क्लासरूम में होते हो और साथ में सॉल्व करते तो आंसर आ जाता है ना? Okay, students, shall I solve it? हाँ बोलो। Yes, sir. Who wants to answer? Gauri, you want to answer, or Mihir, you want to answer? Shall I solve it for you all students? Solve करूँ मैं? Yes, sir. Yes, sir. सरेंडर कर दिया। अभी जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तुम सच्ची तुम लोग है ना अपना सर पटकोगे जब भी मैं सॉल्व करके दूंगा ना। तुम लोग शिट यार, क्या क्वेश्चन, एकदम इतना बेकार क्वेश्चन था ये, इतना इजी क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, तुम लोग ने ये नहीं पढ़ा इंक्लाइन प्लेन, हॉरिजॉन्टल? सोचो ना, ये तुम्हारी कार सर्कुलर मोशन में है तो कहना से ये मेरा इंक्लाइन प्लेन ऐसा हो गया,
ये कार भी ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रही थी, ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। तो व्हाई कांट यू रिजॉल्व फोर्सेस? देखो ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन, ये पार्टिकल है ना, ये तुम्हारा वर्टिकल हाइट दिया हुआ है। सपोज अगर पार्टिकल यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउ कहना है गो फॉर द फोर्सेस, यस, है ना, ये mg नीचे की तरफ जा रहा है, ये कौन सा फोर्स होगा सर? ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। अभी तुम क्या करोगे सर? ये एंगल थीटा है, तो तुम किसको रिजॉल्व नहीं है? स्टूडेंट्स पाथ सर्कुलर है कि नहीं है? तो सर्कुलर मोशन के लिए मुझे कौन सा फोर्स चाहिए स्टूडेंट्स? मुझे कौन सा फोर्स चाहिए? फोर्स सेंट्रीपिटल जो पार्टिकल से होते हुए सेंटर की तरफ जाएगा। तो मुझे बताओ तुम किसको रिजॉल्व करोगे? mg को रिजॉल्व करोगे या n को रिजॉल्व कर रहे थे? सर यहाँ पे कार सर्कुलर पाथ में था तो हमें n को ही रिजॉल्व किया था ना, है ना, आया ना? Yes, sir. कुछ याद आ रहा है? n cos थीटा n sin थीटा। फ्रेंड्स अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एग्रीड? हाँ स्टूडेंट्स, Yes. अगर ये पूरा 90 है तो स्टूडेंट्स कैन आई से ना दिस बिकम्स थीटा। तो अगर मैं n को रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? n cos थीटा। और ये क्या बन जाएगा? And n sin theta. sin थीटा। हाँ स्टूडेंट्स, नाउ सी। हाँ सर, n sin थीटा balances mg, n cos theta will be the force centripetal। mv square by r, right? हाँ देखा, अभी अभी कैसे तुम लोग जा रहे हो? mv square by r कैन आई And टेक then द divide करना है ना? यस। तो क्यों नहीं सोचा? ये कार का सिखाया तो ये क्यों नहीं आया? स्टूडेंट्स यही होता तुम लोग के साथ में, मालूम है एग्जामिनेशंस में तुम लोग ये सोचते हो कि हमें टीचरों ने नहीं सिखाया, हमें टीचर पूरा नहीं सिखाते, तुम्हें ये फील होता है। स्टूडेंट्स डोंट थिंक इन दैट मैनर। कंसेप्ट अगर तुम्हें किसी ने बता दिया तो उसको कैसे दूसरे क्वेश्चंस के अंदर कैसे उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज योर एबिलिटी, दैट इज योर वे ऑफ अप्रोच। तुम कैसे सोचते हो वो, और तुम्हें क्लियरली एक ही वैल्यू दी है। स्टूडेंट्स सोचो ना, ये क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी है, ना ही मास दिया है ना ही रेडियस दिया है, बस। तो देखो अभी तुम सॉल्व करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे rg बाय v स्क्वायर आ गया, है ना। अभी tan थीटा तुम क्या करोगे सर? tan थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखो ना tan थीटा क्या है यहाँ पे? tan थीटा क्या हो जाएगा? r बाय h होगा कि नहीं होगा? तो tan थीटा की जगह पे क्या ना r बाय h इज इक्वल टू rg बाय v स्क्वायर। r कैंसिल, व्हाट इज v? अंडर रूट gh आ गया। क्या जी तुम्हें पता है जी का मतलब क्या है? हाँ स्टूडेंट्स, जी का मतलब गर्ल, जी का मतलब गन, या जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity. तो फिर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, so that is equal to under root 9.8. What is height? Sir, height is given in centimeter. Can I say it's 9.8. 9.8 into 10 raised to minus 2? ये 9.8 into 10 raised to minus 2 हो जाएगा। इसका तुम रूट निकालोगे तो ये 9.8 आ जाएगा। 10 raised to minus 2 को 10 raised to minus 1 निकालो तो what's answer? 0.98 meter per second. Shreya, naughty girl, got it? Sir, I had sent the answer second time. एक पंच मारूंगा। तुमने 9.88 दिया है, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क किया था, समझ में आया? अभी फोन में चेक कर लो, पहले मैंने 9.8 बोला था फोन में घुस के वहां पे आके एक ऐसा ऐसे पंच मार दूंगा, और ऊपर से तो कोई 1 2 3 पहना है, ऐसा मुंह पे से निशाना है। हाँ बोलो श्रेया, क्या बोल रहे थे? सर पहले आपने बोला 9.8 में चेक द यूनिट्स, तो मैंने फिर से भेजा था करेक्ट करके। मैंने आंसर गलत नहीं बोला, मैंने ये बोला है दैट 9.8 व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू गिव इन व्हाट? 9.8 into 10 raised to minus 1 मीटर पर सेकंड। तुम्हारा कन्वर्जन है, यानी देखो ये कन्वर्जन किसके ऊपर डिपेंड होता है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट आ रहा है, यानी 9.8 तो आने जरूरी है। अकॉर्डिंग टू यू तुम ये भी बोल सकते हो v इक्वल टू h, है ना, v इक्वल टू h। तुम्हारा आंसर सिर्फ 9.8 था। तुमने परफेक्टली अगर रिजॉल्व किया होता तो तुम्हारा आंसर मिलता।
तूने ऐसे बाद में मैंने भेजा था 0.98. कहने एक सेकंड मैंने नहीं देखा, मेरे को देखने दो, अगर नहीं बोला तो देख लेना। अरे हाँ यार, अरे हाँ यार, श्रेया ने बाद में 0.98 मीटर पर सेकंड भेजा उसने, मैंने नहीं देखा। तो श्रेया बोलना चाहिए ना सर, आई हैव सेंड इट विद यूनिट, और उसके बाद में मुझे रक्षित का आंसर आया। ओके श्रेया, क्या बात है, लेकिन तुमने ऐसे ही किया ना श्रेया? हाँ हाँ सर. श्रेया, क्या बात है। गौरी, गौरी आर यू देयर? Yes, sir. See, Shreya is answering, she is becoming your now true rival. Okay, see that she doesn't score more in the major test. Okay, Gauri? No, sir, she is my friend, so. क्या बात है श्रेया, तो फिर you don't let her score more, huh? Don't let Gauri to score more in major test, okay, Shreya? Sir, teamwork. क्या बात है, teamwork, and I have a divide and rule policy. Students, you all should be very good friends. I accept. You should be very good friends, students. फ्रेंडशिप एक तरफ होनी जरूरी है। फ्रेंडशिप लेक्चर्स के बाद में एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन के लिए तुम डिवोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स लेक्चर्स के टाइम पे और एग्जामिनेशन में ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू और इन योर क्लासरूम इज अ ट्रू राइवल। ये एक पॉलिसी रखोगे ना स्टूडेंट स्टडीज में, टेक इट फ्रॉम मी, यू विल ग्रेड योरसेल्फ वेरी हाई। ईच एंड एवरी पर्सन इन द क्लासरूम इज अ ट्रू कॉम्पिटिटर। No, after the lectures getting over, after the exams getting over, be the best of the buddies. Doesn't matter. Okay. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Yes, sir. Rakshit and Mihir and all, you all should have answer देना चाहिए था तुम लोग। जैसे मैंने ये लिखा ना, तुरंत फिर I feel so the guys also started getting it. यानी देखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स के अंदर ये देखो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के अंदर तुम्हारा आंसर फिक्स हो जाता है। Okay, students, I wanted to now, students, just go for the unsolved problem, students. There are unsolved problem given on page number, students. Have a look onto it, students, on page number 91 of your module. Students, do you have the module in front of you? No, sir. 1 minute. So it's page number 91. Unsolved exercise, students, level 1. Students, got it, getting it? Just try to get the first 4 answers, students, okay? These are very short answers, students. These are slightly theoretical approach, and students, you need to just give the reason behind it. Okay, page number 91 of your module 2. First 4 questions, students. Sir, can you write the questions? Because actually my module 2 does not have, I guess I got the wrong book. I'll have to exchange it. Okay, fine, doesn't matter. No need to exchange. जो module है वो रख और तुम मांग ले वहाँ से। Sir, because I'm not able to find circular motion chapter in my module 2. It's on page number 91. Have a look on page number 91. Sir, it's like lens, the lens chapter is coming. Oh, Yes, sir. Same here. is it? Module 2 says lens. Yes, sir. Oh, no, students. Sir, I've checked like 4 modules. I did not find circular motion. Okay, doesn't matter, doesn't matter. Okay, I'll speak out the questions, students. Yes, sir. Others also not having it, students. No, sir, we have.
Okay, students. The first question I'm saying is, students, it's a theoretical question. Okay, I'll just speak out the theoretical question, students. An object moves without friction along a concave surface. Students, ये सोचो कि ये concave surface है. An object is said to move along a concave surface. Students, ये center है, students, and the object is moving along a concave surface. Okay. What are directions of normal and tangential component of the acceleration at the lowest point? So I want direction of normal. Students, I want direction of normal and direction of tangential components of acceleration. Tangential component of acceleration. At which point? At lowest point. I repeat, an object moves without friction along a concave surface. Think as if the object is moving, students. ये object है और उन्होंने diagram में ऐसे दिया है. It's moving. Okay. And this becomes the lowest position, which I'm giving you. Students, you have to find out the direction of normal and the tangential component of the acceleration at the lowest point. Anyone? Is the question clear? Yes. Yes, anybody? What are the direction of normal and the tangential components of the acceleration at the lowest point? Students, मुझे बताओ, when the insect is at the lowest point or the object is at the lowest point, students, can you tell me where is the direction of normal reaction force? Upward. Okay. Center. Now, can you tell me what is the components of acceleration when it's at the lowest point? Lowest point के अंदर students कौन सा acceleration यहाँ पे होगा? Gravity. हाँ students, अगर मैं lowest point लेता हूँ students, तो lowest point के ऊपर तो एक तो acceleration centripetal ही होगा ना, है ना? क्योंकि path circular में जा रहा है, concave में जा रहा है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Second, अगर suppose मैंने बोला non UCM है, तो तुम बोलोगे tangential acceleration हो सकता है, आया ना? Yes, sir. Can you get components of this tangential acceleration at the lowest point? Students? If I try to go for the component one, there's acceleration centripetal itself only. How can you get any? Do you get, where do you get components? Friends, if you recollect, agar body यहाँ पे है, तो तुम बोलोगे ना. If I say the body is over here, then you might say that yes, sir. This is what is acceleration centripetal. This is acceleration tangential, students. Are you getting it in this case? So will I get any components for this? No. No. There is no component of tangential acceleration, students. Are you getting it? Yes. So when the body is at the lowest point, students, the direction of normal is upward, acceleration centripetal is upward. Students, there is no tangential component we consider, okay, of acceleration at the lowest point. Students, no tangential component of acceleration at what? Lowest point. क्या ये clear हुआ students सबको? Yes. The rest of them, Shreya, Gauri, what about you all? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second question, students. A simple pendulum is given to you, students, which swings back and forth. Okay.
The mass is swinging at the end of the string. Students, the simple pendulum is moving back and forth in a circular arc. Okay, swings back and forth in a circular arc. I'm not saying circular motion, students. Back and forth in a circular arc. Okay. What is the direction of its acceleration at the ends of the swing? Direction of acceleration at the ends of the swing, students. Sir, I did not understand what ends of a swing you mean. That's why, students, you need a book in front of you. Fine. You will be able to get the book in the next lecture. Next lecture, Yes, students. sir. Okay, fine. Yes. We'll keep we'll take this as the last question. Student, doesn't matter. Okay, students. The question is: a simple pendulum diya hai. A mass swings at the end of the string. This is a simple pendulum, students. Okay, and there's a mass which is swinging at the end of it, students. It swings back and forth in a circular arc. Students, it's swinging back and forth in a circular arc. Okay. What is the direction of its acceleration at the ends of the swing? Now, suppose if I say this is the end and this is another end, ends of the swing. So, pucha hai, what is the direction? Sir, tangent. At the ends of the swing. Sir, with the line only, like tangential. For Okay. the end and at the midpoint they've asked, so it would be upwards. Yes. And second is at the ends and at the midpoint. So can I say, if I say at the ends, it can be tangential, more precisely. Agreed? Yes, At the midpoint, what exactly? So if it's over here, can I say it's acceleration centripetal also? Towards the center at the lowest point? Yes. Agreed, students? So it's a bob is swinging, it's swinging. So what exactly makes the bob to come back to its mean position? Since there is an acceleration and that is g sine theta. Are you getting it? Which can be considered as acceleration tangential down. You consider angle is theta over here. Agreed? अगर मैं mg को रिजॉल्व करता हूँ, ये टेंशन है स्टूडेंट्स, ये mg को मैं रिजॉल्व करूंगा तो देखो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये mg cos थीटा हो जाएगा, ये mg sin थीटा हो जाएगा. So what is the acceleration is down be considered as mg sin theta, and which one is directed towards the center, towards the midpoint is acceleration centripetal. Agreed, students? Yes, sir. The rest of you all, Rakshit clear, Mihir clear. Yes, sir. Clear. And Yes, what about sir. these girls? Shreya, Gauri? Yes, sir, clear. Okay. Students, next lecture will be continuing further, right? Okay. And those who don't have the books, please kindly get the books, okay? Yes, sir. Bye, take care. Thank you, sir. Bye. Bye-bye. Thank you, sir. Most welcome.